does equality matter? What is the chapter which we are going to do? We are going to do equality, right? So in this chapter, what we are going to learn, what is equality, right? And what is the, you can say, how equality can be, you can say, seen from the moral perspective, political idea, right? Does the pursuit of equality have, or you can say, involve treating everyone in the same way in every condition? This is the important question. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इक्वालिटी मतलब ऐसा है क्या कि यू ट्रीट एवरीवन ओके इन द सेम वे, इन द सेम वे in every situation? Is that equality? So we are going to see, you can say, the answer to that today. How may we pursue equality in the society, how to minimize inequality in different spheres, right? How to distinguish between, now equality also we have seen that there are three type of equalities, right? We have achieved political equality if you want, right, in some sense, but what about economic equality? Yes, what about social equality, right? So we are going to see that, right? And you can say very beautiful, we are going to see in the end, we are going to see socialism, Marxism, liberalism, feminism, right? So we are going to see all these things. Can you read all? Can you read this? Whatever you can say, I am marking here. Can you read this? Okay, Sharik says yes. Okay, so we are going to see that, and finally, you can say uh, these are only for you to appreciate the nature of inequality, the facts, figures. So today facts and figures भी हम देखेंगे. So I think that it is a very interesting chapter. I think that it is going to help you a long way in GS1, GS2 especially, even GS3, GS4 में भी बहुत काम में आ जाएगा आपको, और ऐसे में भी आपको काम में आने वाला है. क्योंकि whenever in GS1 you are going to write about topics, right? You have got topics like आइडियोलॉजीज है, सोशलिज्म है, तो आप इक्वालिटी के बारे में बोलते हो. GS2 में ऐसे जीज है, राइट, तो आप इक्वालिटी के बारे में वहां पे बोलते हो. GS3 में तो डायरेक्टली इकोनॉमिक्स में इक्वालिटी आ ही जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड GS4 अगेन इट इज गोइंग टू कम, एंड ऐसे इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? ऐसे से फॉर एग्जांपल 2018 में ऐसे पूछा था, पॉवर्टी, पॉवर्टी एनीवेयर, पॉवर्टी एनीवेयर is threat to prosperity. It is threat to prosperity everywhere. Okay, so some, you can say, similar kind of essay was asked in 2018. So when we say poverty, yes, what is poverty? Yes, what is poverty? What is poverty? Poverty, you can say, is economic inequality. Yes or no? Poverty can be, हम आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स में, poverty can be absolute poverty, poverty can be relative poverty. Yes or no? Okay. And most importantly, what is prosperity? If prosperity is earned, हम आज देखेंगे, then it is okay because of your skills, because of your hard work, you have earned it. But if prosperity is due to privileged position, right, because it might be of your caste, because it might be, you can say, due to hereditary wealth, right? So would that prosperity, would this kind of prosperity, or you can say this kind of affluence, be, you can say, liked by the society? Would you say that it is justice? Would you say that it is justice? Would you say that, you can say, it is acceptable, right? So that is the, you can say, ये सब आप एसेस जो है ना, और फिर आप सोसाइटी का भी आपको यहाँ पे यूज करना है, राइट? यू हैव टू ऑल्सो यूज द सोसाइटी का भी यूज करना है, हमने पढ़ा हुआ था, राइट? सो यू कैन से हाउ टू ओवरकम दिस पॉवर्टी. मार्क्स क्या बोलेगा? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. यस और नो? बट व्हाट इज द अनदर, you can say, perspective of seeing poverty? Yes, what is the other perspective of seeing poverty? देखो मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ इतना अमेजिंग है ना, मतलब I'll tell you, even you can say, even you can say the students who are going to take the comprehensive batch, normal comprehensive batch, right, they'll not be able to analyze on so many levels. It is the beauty of NCERT that is giving you this power. I hope that you realize this power. I hope that you utilize this power. I hope that you inculcate this power. पूरा आत्मसात कर दो. The word is आत्मसात, right? जब तक आप पूरा ये डाइजेस्ट करके आपने आप में ये पूरा इंकलकेट नहीं कर लेते हो, तो यू कैन से आपको ये सब कुछ भी काम में नहीं आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस शुड ऑल बी विद इन योर सिस्टम्स, राइट? ये सब विद इन योर सिस्टम्स होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, टेक
वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स, ओके, बहुत छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए। पूरा सोशियोलॉजी का जो 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो पूरा है, दैट शुड बी समराइज्ड मैक्सिमम इनटू यू कैन से 10 पेजर नोट्स, राइट। जस्ट यू हैव टू राइट कीवर्ड्स, वहां पे सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, ओके, कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, ओके। सिमरन हैज मेड इट, शारिक हैज मेड इट, राइट। तो वैसे आपको बनाना है ताकि आप जस्ट रिवाइज करो, क्योंकि देखो all the normal books, right, when you read the books which are you are going to read for the mains or prelims like Lakshmikant, Shankar IS, right, और Spectrum for history, ये सब तो आप prelims में वापस वापस पढ़ने वाले हो। But do you think that despite this NCERTs being so important, are you going to read them again and again as compared to these books? No. So that is why you should have very very वेरी शॉर्ट नोट्स, ओके। शॉर्ट नोट मतलब मैं तो बोलूंगा सिर्फ कीवर्ड्स का लिस्ट बना दो आप, चैप्टर वाइज कीवर्ड्स का लिस्ट बना दो। समझ रहे हैं आपको? आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी इन द क्लास? यस और नो? यस और नो? ओके। निकोला, पूजा, रूपाली, शरयू, आशिर, ओके। चलो, नाउ इक्वालिटी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इक्वालिटी जो है ना भैया, फंडा इक्वालिटी का जो यू कैन से फंडा है। सो इक्वालिटी इज वेरी वेरी पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल। तो मॉरली मतलब वैल्यू वाइज ऑल्सो पीपल give a lot of importance, right, and polity wise also they give a lot of importance, because in almost all the constitution, right, it is written that equality should be guaranteed. And you can say religions also, many religions also give the importance to equality, especially Islam became, you can say, why it became such a popular religion. Yes, why it became such a popular religion? There are three reasons. First was it is a very simple religion, no, you can say, rituals and all these things, elaborate rituals as in other religions. Second, you can see it gave maximum importance to equality, brotherhood, right. And third, why it became, because when it became popular, it was the most modern religion because it was the latest of its time, right. But you can say with time, you can say rigidity आ गया है अभी, so that is why you can say it might create problem। जैसे हर एक रिलीजन में रिजिडिटी आ जाता है, ओके, हिंदुइज्म में भी रिजिडिटी आ गया था, राइट, कास्ट सिस्टम का। तो वैसे you can say, then it starts creating problem, because the time in which the religion was born, okay, and the time in which we are living, there is, you can say, gap in that, right। इन द गैप आप देखोगे कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो वैल्यूज है वो चेंज होते जाते हैं। So equality is the powerful moral and political ideal, inspired and guided, you can say, that has inspired and guided the human society for centuries, right? Why centuries? So that is what, through polity, through moral values, and through moral मतलब कहीं ना कहीं religion ही हमारे moral values decide करता है, right? पहले के जमाने में especially it is implicit that all faiths and religions which proclaim that all human beings are creation of God, right? So this is the basis. This is the basis. Okay, that all human beings are creation of God. Just give me a moment. Yes.
ओके सो बेसिकली द मॉरल इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखो आप एथिक्स और सब जगह पे यूज कर सकते हो. व्हाट इज द मॉरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? और ऐसे में भी यूज कर सकते हो. व्हाट इज द मॉरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? ऑल रिलीजन से दैट ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए हैं? Where have human beings come from? They are the creation of God. So if God has created all human beings, are you understanding this? So irrespective of the race, irrespective of the color, irrespective of the language which they are speaking, irrespective of, you can say whatever it is, gender, if it is a God's creation, then you need to respect it, and then everybody is equal. समझे आपको? देखो कैसे ऐसे में आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस. सो as a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have equal worth regardless of their color, gender, race, nationality. Right? देखो ये कहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट यूज करोगे? Even you have to use it in the refugee crisis. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रेफ्यूजी क्राइसिस में, एथिक्स में हमने देखा था ना रेफ्यूजी क्राइसिस. रेफ्यूजी क्राइसिस में क्या आता है? व्हाट इज द एथिकल डायलेमा? एथिकल डायलेमा मतलब, व्हाट इज एथिकल डायलेमा? इट इज टू कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, टू कॉन्फ्लिक्टिंग पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज. सो व्हिच आर द टू कॉन्फ्लिक्टिंग पॉजिटिव वैल्यूज हियर? शारिक, मैंने जिसको पढ़ाया एथिक्स, किसको पढ़ाया मैंने एथिक्स? या सो सिमरन, एक साइड पे क्या आएगा? रिसोर्सेज आएगा. एक साइड पे क्या आएगा? नेशनल सिक्योरिटी आएगा. और दूसरे साइड पे क्या आएगा? ह्यूमैनिटी. दूसरे साइड पे क्या आएगा आपका? दूसरे साइड पे आपका आएगा ह्यूमैनिटी. राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो it maintains that human beings deserve equal consideration, respect because of their common humanity. It is this notion of shared humanity that lies behind, for instance, the notions of universal human rights. Universal human rights है ना, जो यूएन ने बनाए हुए हैं, राइट? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो कभी भी यू कैन से हिटलर, हिटलर को किसके अगेंस्ट, यू कैन से हिटलर कौन से केस में उसको ये किया हुआ था? या सो व्हाट इज हिज, यू कैन से दिस, तो उसको क्या बोलते हैं? ही हैज डन क्राइम्स, ही हैज डन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो ये सब वर्ड्स बहुत कीवर्ड्स हो जाते हैं. समझा है क्या आपको? Have you understood the keywords? Very, very important keywords, right? In the modern, you can say in the modern period, equality of all human beings has been used as a rallying slogan, right? All human beings are equal. So rallying slogan in the struggle against the states एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कास्ट सिस्टम, तो इसको हमने कैसे अपोज किया है? दैट यू कैन से ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, राइट? सो इक्वालिटी की कंसेप्ट हम सब जगह पे बोल रहे हैं, स्लोगन सब जगह पे दे रहे हैं. इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सोशल इंस्टीट्यूशंस व्हिच अपहोल्ड द इनइक्वालिटीज ऑफ रैंक, राइट? तो यू कैन से ब्लैक लाइव, ओके, मैटर. अभी का ये चल रहा था ना लास्ट ईयर. यस, लास्ट ईयर this was the, you can say, protests which were happening in US against the state, right? Like black lives matter. So what is that? It is against the state. Why? Because somewhere it is seen that the state are upholding the inequality. Are you understanding this? Okay, so ऐसा ये चीज है. Then social institutions, caste system, or you can say whatever it is. So क्यों inequalities होते हैं? Inequalities of rank, wealth, privilege among the people. इन द 18th सेंचुरी देखो किसने इक्वालिटी को सबसे ज्यादा बूस्ट दिया है? इक्वालिटी को फ्रेंच रेवोल्यूशन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेवोल्यूशन. उसको रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ ड्रास्टिक एंड सडन चेंज इन द सोसाइटी. हाउ? क्योंकि यू कैन से medieval, what is the characteristic of medieval period? What is the characteristic of medieval period? ascription based society, ascription based society, feudal society है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यूरोप में क्या था? यूरोप में अलग अलग क्लासेस थे. स्टेट सिस्टम, डू यू रिमेंबर स्टेट सिस्टम? हाँ या ना? यस. एंड हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द पीपल? हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? या डिवाइन रूल तो है, बट हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? दे वर सब्जेक्ट्स, they were subjects. So from all these things, state system पूरा चला गया
and they all became citizens. That is, all are equal. All are equal. क्लर्जी कोई डिफरेंट नहीं है, नोबल्स कोई डिफरेंट नहीं है, थर्ड स्टेट वाले भी कोई डिफरेंट नहीं है, सब इक्वल है और ये सिटीजन्स है, ये सब्जेक्ट्स नहीं है. सब्जेक्ट्स मतलब क्या है? ऊपर का जो किंग है वो उनको जो दे रहा है दैट इज मेहरबानी करके दे रहा है. आर यू अंडरस्टैंड? यू कैन से सिटीजन्स के क्या होते हैं? राइट्स. राइट्स है. सो किंग इज ऑब्लाइज्ड टू king is obliged to fulfill the rights of the citizen. Are you understanding the difference? I hope you are understanding the difference, everybody. We are having the discussion this morning. This morning जो हम discussion कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा important है आपके understanding में. I hope you take proper notes of this, okay, and inculcate everything into your systems, right? Okay. So French Revolution carried the slogan that we are going to have liberty. Now you know what is liberty, that we are not going to have the constraints, right? Yes, we want equality and fraternity. So equality, fraternity are, you can say, related concepts, right? Fraternity is again brotherhood. Brotherhood matlab, when can we have brotherhood? When we have all got equal relations. We have all got equal relations, not three different states, right? We have got the equal relations. इसके लिए हम fraternity कर सकते हैं, right? And they revolted against all the medieval, you can say, concepts like the feudal aristocracy, the monarchy. The demand for equality was also raised during the anti-colonial liberation struggles in Asia and Africa. तो हमको भी क्या problem था British के साथ, right? British, they considered that they are racially superior, right? They are racially superior. इसके लिए colonial, जब भी आप hangover की बात करते हो, right? Colonial hangover की बात करते हो, still you can say somewhere we have, you can say, that kind of, you can say, thinking, right? Somewhere we might have that kind of thinking which shows that, you can say, we are inferior. We are inferior, right? Yes or no? That is why somewhere today also fair and lovely क्यों चलता है इंडिया में? Because people think that white color is superior. White color is superior. Somewhere that might be the feeling. Yes, now the society is changing to a major extent, right? Yes or no? That can be seen even in our, you can say, movies. You can see now more and more, you can say, dark people or the brown people become hero and heroines. Yes or no? In the last, you can say, 5 years, you can see them more. They have been appreciated more. Are you understanding this? So ये changes हो रहे हैं. But you can say these are all gradual changes. India, इसके लिए हमेशा हम क्या बोलते हैं? इंडिया में क्या होता है? हमेशा इवोल्यूशन हो रहा है इंडिया में. कैन यू से, यू कैन से इंडिया हैज अ रेवोल्यूशन? वेरी वेरी रेयर, राइट? यू कैन से ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड. ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड दैट वाज द रेवोल्यूशन. दैट इज व्हाई देखो, व्हाई व्हाई बी आर अम्बेडकर, okay, why B.R. Ambedkar chose Buddhism? Because it was an Indian religion, plus it had that revolutionary zeal and character. Are you understanding? Revolutionary zeal था कि भाई कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए, और pragmatism था, practical था बुद्धा, right? We know all that things. Yes or no? So that is why he chose Buddhism. Okay, so आगे जाएंगे हम, right? Should we go ahead? So what is the verdict tomorrow? 10 or 2? 10 or 2? ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एक पोल ले लेता हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट यू कैन वोट फॉर दिस एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन मेक द डिसीजन. Yes, you can vote whatever you want to vote, right? Let us see. Okay, so the voting is, okay, everybody has voted. Everybody in the class. Okay.
ठीक है, तो देखो 47%, मतलब देखो 7 votes are for 10, 6 votes are for 2, right? And sir decides 2, तो मतलब ये हो गए 9 votes. Okay, I'll let you know. चलो. So let us go ahead. Women, Dalit have been marginalized, we know that, so they don't have equality. Today, equality is widely accepted ideal, which is embodied in the constitutions and many laws of the country. So equality आज सब जगह पे cherished है, and at least formally everybody agrees that there should be equality. Yet it is inequality rather than, you can say, तो यही हमारा क्वेश्चन है कि भाई सबने एक्सेप्ट किया हुआ है इतने सालों से, एटलीस्ट टिल फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से सबने एक्सेप्ट किया हुआ है, देन वी आर सिटिंग इन 2021, why is there, you can say, still inequality in the world, right? And we say that inequality बढ़ते ही जा रहा है. Why do we have this kind of pictures? आप देख रहे होगे almost this, they are writing like a essay. Yes, almost they are writing like a essay. Can you see this, right? So देखो कैसे वो लिख रहे हैं कि then why inequality is, you can say, increasing, like you can say, you देखो कैसे ये लोग मस्त दिखा रहे हैं एग्जांपल से कि स्लम्स है और लग्जरी हाउसिंग है, राइट? हमने ये ब्रिटिश टाइम पे भी देखा हुआ था, राइट? स्लम्स एंड लग्जरी हाउसिंग. देन यू हैव गॉट स्कूल्स with world class facilities, air conditioned classrooms, okay, along with school which may lack even drinking water facilities, right? तो drinking water भी भैया नहीं है ये schools में, okay, or toilets, waste of food, as well as, you can say, starvation. There are glaring differences between what the law promises and what we see around us. Yes or no? Yes or no, right? So reading the global inequalities, देखो ये थोड़ा है ना, आपने ऑक्सफैम रिपोर्ट में ये आपने असाइनमेंट किया होगा. हैव यू डन द असाइनमेंट ऑफ दिस? ऑक्सफैम रिपोर्ट में किया है आपने असाइनमेंट, हाँ या ना? यस और नो? सो देखो वर्ल्ड richest 50 individuals, okay, world's richest only 50 individuals, they have got more income than the poorest 40 crore people. 40 crore people, right? Are you understanding this? Just 50 लोग है, okay. Now this is old data, और इससे तो और वर्स ही हुआ रहने वाला है. It has become more worse because inequality is increasing. You can see world's 40% of the population only own, you can say, 5% of the global income, whereas the richest 10% own 54% of the global income. Are you understanding this? समझ रहा है नहीं समझ रहा है? The first world of advanced countries, mainly North America, Western Europe, have 25% of the, you can say, world's population, but they own, just imagine, they own, you can say, 86% of the world's industry, consume 80% of the world's energy. Just imagine, 25% जो लोग हैं, ओके, वो ऑलमोस्ट 86% उनके पास इनकम है. मतलब आपको क्या समझना है, 75% जैसे जो हम लोग हैं, वो कितना है उनके पास? उनके पास सिर्फ 14% ऑफ द इनकम. आर यू विथ मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? ओके, सो यू कैन रीड दिस, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके. और ऐसे 2-3 फैक्ट्स आपने लर्न कर देने चाहिए, ओके. लेटेस्ट जो 2-3 फैक्ट्स है, ऑक्सफैम रिपोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट, यू शुड बी लर्निंग. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी, ओके, यू शुड बी नोइंग अबाउट द करंट इकोनॉमिस्ट. उसका नाम क्या है? थॉमस पिकेटी. Thomas Piketty, right? So he is a French, you can say, economist who has written on capitalism, and he is a critic of capitalism, and he says that how inequality has increased, and that is creating the many day modern problems. Many modern problems have been created by the inequality, which we say due to, you can say, capitalism, right? Clear? Now you can say, let us go ahead. देखो ये सेंसस 2011 का फिगर है, right? What does this census 2011 figure show us? Inequality again. Inequality on the basis of, you can say, rural, urban. तो यार देखो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रूरल ओनली 50%, यहाँ पे 93% है. टैप कनेक्शन देखो इन द हाउस. देन बाथरूम इन द, यू कैन से, हाउस, राइट? स्वच्छ भारत ने चेंज किया होगा ये 100%. टेलीविजन, एंड दिस इज द मेजर थिंग. देखो 2011 में, दैट इज
10 years before, what was the situation in India? Only in rural areas, 2% had the car. Okay. And here, 10% people had car. So that is what is the, you can say, reality which we have to understand. Right? Why are we talking about global and national inequalities? Right? When we can, you can say, when all around us there are inequalities to which nobody seems to object, just like my parents favor my brother over me, right? So inequalities are everywhere around us. So वही हमको समझना है कि ये inequalities है, क्योंकि हमको हमारा जो upbringing हो सकता है वैसा कि you can say we don't even realize that this is inequality. So that is why we need to realize that what are all the inequalities which are around us. So we are living in a paradox. क्या paradox है, देखो कितना beautifully उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसे almost ऐसे लिख रहे हैं वो लोग, right? That almost everyone accepts the ideal of equality, but still we counter inequality everywhere. So you can say this is a very complex world. क्यों? क्योंकि unequal wealth है, unequal opportunities है, work situations है, power है. Should we be concerned about this kind of inequalities? Are they permanent? You can say an inevitable feature of our social life. तो हम ऐसा बोल दे क्या कि इक्वालिटी जो इनइक्वालिटी जो है, दैट इज, ये तो रहने वाला है, परमानेंट है, क्योंकि हर एक सोसाइटी में था ये इनइक्वालिटी, और इनएविटेबल है, राइट? दैट इज, यू कैन से, इट इज गोइंग टू, बाउंड टू अकर, which reflects the differences of talent, right? So अभी हम आगे जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि inequality ये natural चीजों की वजह से है या artificially man made है. Let us, you can say, see that. Natural वाले क्या बोलेंगे, inequality क्यों है? भाई लोगों का talent अलग है, लोगों का skill अलग है, लोगों का intelligence अलग है, लोगों का hard working जो capacity है वो अलग है. That might create, you can say, inequality, right? So you can say talent, ability, yes or no? Okay, so that is creating difference. Or are these inequalities a consequence of our social position or rules? मतलब ये man made created है. Is it man made? What do you think? Yes, what do you think? Is it man made or it is artificial? What do you think? Write in the chat box. So it is the question of this kind. It is, you can say, question of this kind. Okay, that makes equality one of the central themes of the social and political theory, right? A student of political theory has to address all this. What does equality imply? Equality मतलब क्या चाहिए आपको? You are saying equality, so exactly what do you want? Exactly what do you want, right? Because equality would be having different perspective. What are we trying to achieve, right? Are we trying to eliminate all differences of income? मतलब सबका income same होना चाहिए क्या? Yes, should everybody's income be same? Yes, in other words, what kind of equality are we pursuing and for whom, right? Some other questions that have been raised regarding the concept of equality, which we will consider here. To promote equality, should we always treat all persons in the same way? So are we having same income? Are we having identical treatment to all? Right? How should society decide which differences are acceptable, which are not? Also, what kind of policies should we pursue? तो हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, कौन से पॉलिसीज होंगे जिससे सोसाइटी और ज्यादा इगैलिटेरियन बन जाएगा. What is egalitarian? Everybody in the class, what is egalitarian? Can anybody tell me what is egalitarianism? Yes, anybody in the class? Can anybody tell me what is egalitarian? Okay, so when you see the meaning of egalitarian, right? So it is used about person system following a principle that everyone should have equal rights. Are you understanding this? So equal rights, and you can say example अगर आप देखते हो egalitarian का, right? So egalitarian is defined who believes that all people have equal rights and should be treated equal. A person who accepts and promotes social equality. Okay, so they are, you can say, egalitarian. So egalitarian, you have to understand that everybody is not completely having same income, but more or less you can say similar, just like tribe type जैसे आपने बताया, correct? Okay, तो egalitarian society tribal society होती है, क्योंकि you can say, I can give you the example. In Nagaland I had gone, okay, I had gone to Kohima, okay, and
I don't know whether I've told you this example or not, right? So there was a, you can say, big tribal meet, and the chief minister came. So it was not like you can say, oh, chief minister has come, some special person has come. Yes, special person has come. He's the chief minister of your state. But we could, you can say, see that how they have equality, right? वैसा वर्शिप नहीं है, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे वर्शिप वर्शिप होता है एकदम, वैसा वैसा सिचुएशन नहीं है. देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केम, राइट, इन द इवनिंग टू मीट अस. सो देयर वाज नो तामझाम कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया है, कोई तो बहुत बड़ा इंसान आया है, उसका पूरा फौज आ रहा है, ऐसा वैसा. मस्त आ रहा है, बैठ रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है ऑन एन इक्वल, यू कैन से लेवल. सो दिस आर द ट्राइबल सोसाइटीज की कैसे एक इगैलिटेरियन वहां पे सोसाइटी बन जाता है. इसके लिए मेनी ऑफ द पीपल वुड नॉट लाइक दिस, क्योंकि अब बाबा उनको लगेगा कि हमने इतना पढ़ाई किया है, क्यों पढ़ाई किया है, हमको तामझाम भी चाहिए, हमको स्टेटस भी चाहिए, राइट? यस और नो? ओके, तो ऐसा यू कैन से, ये वहां पे जाके हम क्या करेंगे सारे इक्वलिटी में. So some people, that is why would not, you can say, like this kind of thing, but this is how it should be, right? Yes or no? Then only we'll become the developed state. So the question that arises is, which distinctions and differences are acceptable, which are not acceptable when people are treated differently just because they are born in different religion. Okay, they have got different gender. This should be unacceptable. So ascriptive, अगर आपके क्वालिटीज के वजह से इनइक्वालिटी है, so that should be not acceptable, right? So this is the first point on which we have agreed. But human beings may pursue different ambitions, right? किसी को सिंगर बनना है, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को जॉब करना है, किसी को ब्यूरोक्रेट बनना है, किसी को यू कैन से ट्रैवल करना है. तो वॉट एवर दैट इज, राइट? Different ambitions, goals. Okay, and not all may be successful, not all may be successful, so long as they are able to develop the best in themselves. We would not feel that equality has been undermined. Are you understanding? So everybody got the opportunities to do whatever they wanted to do, and then somebody became successful, somebody were not that successful, but then we say that there was equality of opportunity, except accepted by everyone. Some would become very good musicians, while others would not be equally outstanding. Some would become very good scientists, others may not be that, you can say, good, right? It all depends upon your hard work, how much, you can say, focus, concentration, how much commitment, how much commitment do you have. Are you understanding this? How much commitment you have for the, you can say, this. So ये चीज आपको समझने की जरूरत पड़ जाएगी, right? Did you see the yesterday's UPSC daily motivation which we put in our Instagram or other channels? Did you see that, or Telegram? Yes, what was that? What was that? It is hard to beat a person who never gives up, right? So your commitment, कितना commitment है आपका, कभी never give up वाला attitude होना चाहिए आपके पास, right? So this does not imply the elimination of all forms of differences. It merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by the social circumstances. तो दो important keywords है यहाँ पे जो आपको लिखने हैं कभी भी. Treatment जो हमको मिलता है सोसाइटी में से, और हमको जो opportunities मिलती है, they should not be based on ascriptive status. They should not be based on ascriptive status. Ascriptive matlab that which you have not earned, right? So what we should have? We should have equality of opportunities, right? So equality of, you can say, same rights, opportunities सबको होने चाहिए, so that we can develop our skills, we can develop our talent, we can pursue the goals and ambitions. This means that in a society people may differ with regard to their choices and preferences. So people क्या कर सकते हैं? They might be differing with regard to their choices, with regard to their preferences. They may also have different talents and skills, right? Which results in some being more successful in the chosen than others. But because only some
became ace cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. So society का यहाँ पे problem नहीं है. क्यों? क्योंकि society ने सबको equal opportunities दी. And ये देखो capitalism जो है ना दोस्तों, capitalism आपने movies देखे होंगे वेस्ट में. Yes, you would have seen the movies like which is that movie you can say जो बहुत ही popular है, the movie between the father and the son. यस, कौन सा है विल स्मिथ का अपना कौन सा मूवी है? In that you can say the father and son is shown and they are, yeah, pursuit of happiness, exactly. This word is important, pursuit of happiness. This word is very very important. This is there in their constitution. This is there in their constitution. Plus every, you can say, a president would say the American dream. American dream. So what are they trying to imply? What are they trying to imply? That everyone would get equality of opportunities. That is why America is America. Yes, मतलब वहां पे भी प्रॉब्लम है. Blacks might be differentiated. वहां पे भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा. But on an average, right? अगर आप देखोगे तो everybody has got equality of opportunity there. समझ रहे हैं आपको? Right? And that is why देखो अगर एक रिच पर्सन है वहां पे, ओके, इंडिया में देखो, इंडिया में ड्यूरिंग द नेहरू पीरियड और ड्यूरिंग द सोशल पीरियड, ओके, रिच पीपल, ओके, would not be seen would not be seen as, you can say, they might not be seen with a positive image, right? हमेशा इंडिया में देखो, आप रिच जो होते थे ना, पहले की बात करो, आई डोंट नो वेदर योर जनरेशन कैन रिलेट टू दिस, बट जब भी पहले की बात हम करते हैं ना, तो रिच जो लोग थे ना, तो उनको हमेशा ऐसे एक नजर से देखा जाता था पहले के टाइम में कि इसने कुछ ना कुछ गफला किया हुआ है, दिस पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग टू बिकम रिच. और ऑलमोस्ट यू कैन से रिच जो है, ओके, ऑलमोस्ट रिच जो है, ओके, सो ऑलमोस्ट जो जो वहां पे रिच जो है, ओके, मतलब इंडिया में जो रिच है, सो दे वेर समटाइम्स सीन इन द नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट. व्हाई? बिकॉज जमींदारी में लोग रिच बन गए, लोगों को एक्सप्लॉइट करके. लाइसेंस राज में लोगों ने लाइसेंस ले लिए और ये सब एस्क्रिप्टिव, इसमें से लाइसेंस मिले, कोटा, गवर्नमेंट बैकिंग, करप्शन किया उन्होंने. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट इज व्हाई दोज हु वर रिच, दे वेर, you can just seen in a negative context. But in USA, those who are rich, they would be respected because most of them have not become rich due to ascriptive status, because they have become rich because they might have got intelligence, they might have got hard work. So richness, there is a quality which is respected, which is, you can say, respected. देखो सही, हमने सोशियोलॉजी पढ़ा है, तो आपने ही इसका आंसर देना चाहिए. हमने सोशियोलॉजी में दोस्त क्या पढ़ा है? सोशल मूवमेंट्स पढ़े हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर सोशल मूवमेंट्स? रीजन फॉर सोशल मूवमेंट्स हमने क्या देखा है? यू कैन से, लोगों को क्या लगता है? रिलेटिव डेप्रीविएशन. व्हाट आर द अदर रीजन फॉर सोशल मूवमेंट? दोस्त अभी जो यूज किया है उसको अप्लाई कर और आंसर लाने को ट्राई कर. रिलेटिव डेप्रीविएशन, राइट? सो सम ब्लैक्स वुड से दैट मोर ऑफ द ब्लैक्स आर पुअर and whites are rich. Okay, second thing, that they are aware, they are mobilized about their own situation, they are, you can say this, that is why you can say they can come up with this movements. That is why they can come up with this movements, because उनको एक self awareness आ गया है ये सब चीजों का, right? And the third thing, yes, and the third thing is, yes, still there is this somewhere in USA, okay, जैसे हमारे यहाँ पे इनविजिबल आपको कास्ट सिस्टम दिखेगा अभी भी बहुत जगह पे. In many places you will see invisible caste system. It might not be prevalent in the younger generation, but it is still prevalent in your father's generation or your grandfather's generation. You agree to this or not? Yes or no? तो वैसे ही वहां पे एक इनविजिबल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलता है. Are you understanding this? Yes. Parth, again, give answer to your own statement. Why are they looting? Because they feel relative deprivation, because they feel that जो whites standard of living जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल रहा है. Are you understanding? They are poor. And why are they poor? It becomes a vicious cycle. Okay, देखो क्या होता है ना दोस्तों, आपको एक चीज समझना है कि
how it is different. Now, blacks who went in, you can say, who are there in America. Who were they historically? Who were they historically? Historically, कौन थे? How did the blacks end up there? Slaves. Most of them would be slaves. Are you understanding this? Now you can say you have to understand that the slaves had very poor economic condition, plus socially they were treated, you can say, with complete inequality. Now these slaves, through hard work, through, you can say, social mobility, through constitution, they need to change all these things. They need to change their attitude also. They need to get educated. They need to get educated. Then after education, they need to become rich. So this is going to take long time. This is going to take long time as compared to say whites. और you can relate with, चलो whites तो आपको नहीं समझेगा, but आपको मैं एकदम easy example देता हूँ. Indians, कौन Indians जाता है भाई? USA में कौन Indians जाते हैं? Which Indians go to USA? Which Indians go usually to USA? Those who, I will not say rich, those who have maximum IQ, those who have got maximum IQ plus they have got rich. Yes or no? क्योंकि ये लोग सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, पढ़ाई किया होगा, इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, राइट? प्लस दे आर रिच, राइट? नाउ how would they, you can say, how would be their socialization for their children? How would be the socialization for the children? Best nutrition, best education, best, you can say, values. So how would their children be usually? And biologically also, Indians plus Indians would get married, so genes would be of superior quality. Are you understanding this? And plus you have got all these things, so IQ wise they are good. So again their generation, there is a probability that their generation is going to be rich. Their generation is going to be, again, you can say, with more IQ. Are you understanding this? समझ रहा है आपको? उनका एजुकेशन अच्छा होने वाला है, उनका एजुकेशन अच्छा होने वाला है. बट ये एक विशियस साइकिल है. इनका क्या है? ये लोगों का एक विशियस साइकिल है. इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू कम आउट बिकॉज ब्लैक्स को सोशलाइजेशन कैसे मिलेगा? इफ ही इज इन द स्लम्स, उसको सोशलाइजेशन कैसे मिलेगा? अलग सोशलाइजेशन मिलेगा उसको. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ रहे हैं आपको क्यों देयर इज इनइक्वालिटी एंड व्हाई इट इज गोइंग टू टेक टाइम coming out of the inequality, right? So that is the thing, right? So even if in America there is equality of opportunity, who is going to, you can say, मुझे बताओ, who is going to make the most of the opportunities? Are Indians going to make the most of the opportunities, or the, you can say, blacks there, or the blacks there? Now you tell me, considering the situation, the reality, who is going to make the most of the opportunities? Yes, Indians. So that is why you see Pepsi head was Indian, Microsoft head was Indian, you can say Google head was Indian, right? Or is Indian. Why this? Because they are making the equality of opportunity. Okay, so whites, they are giving chance today, but Indians are in a position to exploit this. Still, blacks might not be everywhere. They might not be everywhere in a chance to exploit this opportunity. समझा नहीं समझा सबको, right? फंडे देखो, क्लियर करो फंडे एकदम. Okay, so this means that in a society people differ with regard to their choices. तो आपने अलग choice ले लिया. Now you can say I had a choice to go to business, I had the choice, you can say, to become a bureaucrat, and I had a choice to become a teacher. What is the, you can say, choice which I have made? A teacher. Now you can say, if I am good at it, I would, you can say, prosper. But if I am not that good, okay, automatically what is going to happen? I'm not going to prosper. But then you will not say that society is not equal, right? So it depends upon my talent, my skills. Okay, then I can become more successful.
okay, in the chosen career. Just because some cricketers ace, some lawyers ace, you cannot say that, you can say society is considered unequal. It is not lack of equality of status, wealth, privilege that is significant, but the inequalities in the people's access, right? तो equal opportunities create करने के लिए, equal opportunity create करने के लिए हमको क्या देना चाहिए as a state? What should the state guarantee to the citizens? Yes, what should it guarantee to the citizens so that everybody has the equal opportunities? क्या guarantee करना चाहिए उनको? पहली चीज उन्होंने guarantee देनी चाहिए कि भाई सबको education मिलेगा, सबको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा भाई, okay, so that your health and proper development happens. That is why we have got ICDS, that is why we have got पोषण अभियान schemes. देखो अब भी हमारे, समझ रहे हैं आपको, हाँ या ना? राइट? दूसरा क्या मिलना चाहिए लोगों को? सबको हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर मिलना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर आपने ये तीन चार चीजें, सेफ हाउसिंग, ये तीन चार चीजें आपने दे दी, और पांच, आई वुड से देयर शुड बी पीस. लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. मतलब क्या है? हमेशा दंगे है, हमेशा स्ट्राइक है, हमेशा बंद है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर ये सब चीजें है तो एवरीबडी वुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप, विच टुडे अमेरिका इज गिविंग टू मैक्सिमम ऑफ इट्स सिटीजन. दैट इज व्हाई इट इज द, you can say, greatest country in the world. It is the greatest country in the world. We have to accept that, and we have to accept that, because why I'm saying is, I'm not no less patriot. You have to understand this. I'm not at all less patriotic than you. But if we accept that what they are doing good, then that shows us the direction in which we have to go, and then we can become a better country and a better society. Right? समझ रहे हैं आपको? नहीं तो सर आप बोलोगे सर को, you can say, सब वेस्ट का ही पसंद आ रहा है. Okay, sir never says that India is great. Okay, so again, it is all, you can say, we have to be most pragmatic and we have to be most understanding, so that we can. Why I'm telling you all these things? Because I have got hopes in you. You are going to become the bureaucrats. Are you understanding this? And when you try to implement this kind of systems in our country, automatically our country and the life of the people becomes so much better. That is why you can say I am teaching. So I was teaching MBA students also. There is a lot of offers for me to go and teach in best of the MBA institutes. But still, I, you can say, prefer to teach bureaucrats. Why? Because you can say it creates much more impact on the society. That is what is my belief. Right? So now, natural and social inequalities. What is this? Let us see. A distinction has sometimes been made in political theory between natural inequalities and socially produced inequalities. Right? Natural inequalities are those that emerge between the people as a result of their different capabilities and talent. तो ये natural हो गया. और social inequalities क्या है? जो caste produced है, जो you can say society produced है, जिसकी वजह से inequal opportunities आ जाते हैं. जैसे यहाँ पे gender के ऊपर से सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा कॉमन सोशल इनइक्वालिटी है जो पूरे वर्ल्ड में यूजुअली है, मेन आर सुपीरियर टू वुमेन. इट इज, यू कैन से, मैंने बताया था ना आपको, नेचुरल इनइक्वालिटी है. ओके, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. राइट नाउ दिस गर्ल इज सेइंग, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई गेट मोर मार्क्स देन यू. आप देखते हो ना 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स एवरी ईयर. हु इज द टॉपर यूजुअली? हु इज द टॉपर यूजुअली? 10th स्टैंडर्ड, राइट? गर्ल्स. Yeah. Then you can say I also help the mother in housework. So I have got, from the very start, I have got this. This is called as double burden. Double burden. So how can you say? How can you say that I am? You are superior, right? तो देखो, एक्चुअली यू कैन से सोशियोलॉजी के भी जो एनसीईआरटीज है हमने इतने स्लो करने चाहिए. तो मतलब टेकिंग वन चैप्टर एट अ टाइम, तो इतना डिटेल में डिस्कशन होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और फिर आपका, मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब आपका जो ग्रास्पिंग है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इतने डेप्थ में आपका हो सकता है, राइट? ओके, बट देन वील हैव टू हैव अ मिक्स बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट ऑल द एनसीईआरटीज आल्सो, राइट? सो some chapters I am going slow, explaining lot more so that you understand that, but then some chapters I have to go fast, okay, so that we complete the syllabus also. I hope you can say you understand this strategy. So natural inequalities are considered as a result of different characteristics and abilities, right? Social inequalities are created by society. Okay. Certain societies, for instance, value those who perform intellectual work as compared to the manual work and reward them differently, right? So हमारे यहाँ पे जो caste system है, okay,
was against the higher caste should not do manual work. Manual work is for the lower caste. Higher caste should do all the intellectual work. ऐसा इनका मानना था. That is why स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान, why you can say uh, it is an important abhiyan to become successful, because it is going to change the attitude of the people, that higher caste should also take up the broom and do the manual work. They may treat different people in the different race, color, okay, reflect the values of the society. Some of these maybe certainly appear to us as unjust. The distinction is sometimes useful in helping us to distinguish between acceptable and unfair inequalities in society, but it is not always clear or self evident, right? So जो distinctions होते हैं, okay, वो कभी कभी हमको help करते हैं to distinguish between कौन से acceptable है and कौन से unfair inequalities है, but वो हमेशा clear नहीं रहते हैं. फॉर इंस्टेंस सर्टन इनइक्वालिटीज जो है, वो इतने टाइम से हम इनइक्वालिटी दे रहे हैं कि हमको वो लग सकते हैं कि जस्टिफाइबल है, हमको लग सकते हैं वो नेचुरल इनइक्वालिटीज है. वही एग्जांपल है वुमन का एग्जांपल, राइट? मेनी ऑफ देम यू कैन से फ्रॉम द बर्थ आर grown up in such a way that it is the weaker sex. Are you understanding? Women are timid, they are less intelligent, they need special protection, right? Therefore it was denying women equal rights. Similarly, black people were considered by their colonial masters as of less intelligence. Now have you understood why you can say अगर IQ भी आपने measure किया, even if you measure the IQ of blacks in North America and whites in North America, why there is going to be a difference? Yes, and still the you can say study would not be true. Yes, study would not be true. Okay, because of the historical जो you can say wrongs है, yeah, because of the historical wrongs. Okay, right? So you can say इनके लिए इसके लिए इनको लगता था blacks के पास इंटेलिजेंस ही नहीं है, दे आर चाइल्ड लाइक, तो ये बच्चे ही रहते हैं, राइट? उनको मैनुअल वर्क ही कराओ, उनको स्पोर्ट्स कराओ, उनको म्यूजिक कराओ, and that is why they justified the institutions like slavery. Okay, so but now all these assessments have been questioned. So all these assessments now have been questioned, right? Another problem arises with the idea of natural differences is some differences would be considered natural are no longer, you can say, seems to be unalterable. This is with the disabled persons. तो पहले उनके बारे में जो ओपिनियन था या जो भी व्यू था, दैट यू कैन से हमने सोशियोलॉजी में भी देखा है कि बेचारे लोग हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, दे कैन नॉट डू थिंग्स, बट नाउ you cannot think that, right? So these are not now natural differences because of the advancement of the medical science and technologies, right? So computers can help blind people, wheelchairs, okay, are there, okay, and even cosmetic surgeries are there. The greatest example is of the physicist, okay, one of the greatest physicists of our time, that is Stephen Hawking. He could hardly move or speak, but he has made one of the greatest contributions to the science. So it would seem unjust to most people today if the disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability, okay, or fair reward for their work. So बहुत लोगों को क्या लगेगा? It would seem unjust to most of the people today if the disabled people are denied necessary help. मतलब अगर उनको जो चाहिए, मतलब से फॉर एग्जाम्पल उनके लिए रैम्प्स रहेंगे, अगर नहीं है तो वो इनइक्वालिटी है आज. बिकॉज दे ऑल्सो हैव यू, मतलब क्या है, डिसेबल्ड लोगों को आज यू हैव टू इंश्योर that they also get equal opportunity they also get, right? So given all these complexities, it is difficult to use natural and socially produced distinctions as a standard by which the laws, policies of the society can be assessed. For this reason, many theorists today differentiate between inequality arising from our choices and inequality operating on account of, you can say, family or circumstance in which people is born, right? So मतलब inequality आपके choices, मतलब say for example inequality between the Ambani brothers is because of the choices which they have made, right? You will justify this inequality. One is, you can say, so rich and one is not so rich.
Okay, and other is due to account of the family or the circumstance. If you are born in a poor family, it is the latter which is the source of concern. Okay, to the advocates of, you can say, equality, right? So how inequality कैसे देखा जाता है? Two reasons: because of your choices, are you poor or there is inequality, or because of your conditions where you were born, right? So वो आपको देखा जाता है. So हमको अभी क्या करना है, इसके ऊपर फोकस है हमारा, इसके ऊपर हमारा फोकस है. नाउ थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. कौन से थ्री डायमेंशंस है? थ्री मेन डायमेंशंस आर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक. तो हम देखते हैं पॉलिटिकल, यू कैन से इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हम ज्यादा से ज्यादा इंश्योर कर ही चुके हैं. हमने ये पहले भी, यू कैन से, डिस्कशन किया हुआ है दैट वी हैव ट्राइड टू ensure that there is a political equality. How we are giving today equal citizenship. तो जो भी सिटीजन है उसको सबको इक्वल राइट्स है, as mentioned in the constitution. We don't say that rich are going to have different fundamental rights, Brahmins are going to have different fundamental rights. No, there is a, you can say, rule of law. So everybody is equal in the eyes of law, right? So citizenships, equal citizenship दिया है सबको, basic rights सबको same है, right to vote सबको same है, freedom of expression सबको same है, right? Freedom of movement, association, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ोगे, सबको ये same है. These rights are considered necessary to enable the citizens, okay, to develop themselves and participate in the affairs. तो ये rights क्यों हमने दिए हुए हैं? So that they can develop their potential and there are no constraints in development of their potential. But they are legal rights, but they are legal rights, okay, which are given by the constitution and the laws, right? तो right देना और उसको implement करना, उसमें फर्क है. Inequalities क्यों आ जाते हैं? Okay, are often the result of differences in resources and opportunities. Are you understanding? But हमने ये पेपर पे दे दिए rights, but सोसाइटी का कंडीशन, रियल कंडीशन क्या है कि भैया रिसोर्सेज जो है इंडिया में वो स्केर्स है. क्यों स्केर्स है भैया? इतना ज्यादा पॉपुलेशन ही हमने बढ़ा के रख दिया है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट इज व्हाई यू कैन से, प्लीज रिक्वेस्ट कि पॉपुलेशन, यू कैन से, ये अच्छे से होना चाहिए, सो दैट यू कैन से the resources can be distributed properly, right, which are available. For this reason, there is a demand which is often made that equal opportunities or a level playing field should be, you can say, made. तो अपने पेपर पे दे दिया है, बट वो ग्राउंड पे आना चाहिए और ग्राउंड पे नहीं आ रहा है. That is why what we are trying to have, if everybody wants to enjoy equal opportunities, then you should create a level playing field. And when you say that you want to create this level playing field, that is why there is reservation. That is why there is a reservation, right? But we should also remember that although political and legal equality by itself may not be sufficient to build a egalitarian society, just an egalitarian society, but it is an important component of it. मतलब आपका ये बेस है, इसके ऊपर से आप पूरा बिल्डिंग बांधोगे. विदाउट दिस बेस, पॉलिटिकल इक्वालिटी, आप बिल्डिंग बांध ही नहीं पाओगे. तो पहले आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. Okay, you'll have to establish the political equality first and then you have to go ahead. ठीक है. Okay. Now what is social equality? वही social equality. So political equality, that is equality before law. सब law के सामने equal है. ये first step है. Okay. But ये करने के बाद भी equality of opportunities हम नहीं कर पाते हैं. बहुत सारे लोग, you can say, exclude हो जाते हैं, right? Why they become excluded? Right? Because the pursuit of happiness pursuit of equality requires that every, you can say, community, every social entity has equal chance, right? Or you can say, for this what we have to do, we have to minimize the effects of social
एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो सोशल इनइक्वालिटी मतलब आपको पता है, राइट? सोशल इनइक्वालिटीज मतलब कास्ट की वजह से इनइक्वालिटी हो सकता है, सोशल इनइक्वालिटीज मतलब जेंडर की वजह से इनइक्वालिटी हो सकता है, ट्रांसजेंडर को प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इनके लिए अगर हमको ये करना है दैट एवरीबडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही वापस रिपीटेशन, हेल्थ केयर दे दो, एजुकेशन दे दो, नरिशमेंट दे दो, मिनिमम वेज दे दो, राइट? सो दिस वी हैव टू provide. In absence of such facilities, it would be difficult for all the members of the society to compete on the equal terms, where equality of opportunity does not exist. देखो क्यों, अगर हमारा equality of opportunity हम सबको इंश्योर नहीं करते हैं, तो it is a big loss to our country. Why? Or our society? Why it is a big loss? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ह्यूज पोटेंशियल के लोग होंगे, टैलेंटेड लोग होंगे, बट वो सब क्या होंगे, वेस्टेड हो जाएंगे। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे जो आज क्या कर रहे हैं, तो यू कैन से दे हैव बिकम स्वीपर्स इन द स्ट्रीट, because they might not have got the opportunity to pursue their hobbies, or they might not have got the opportunity to have the best of the coaches, right? In India स्पेशल प्रॉब्लम है सोशल इक्वालिटी का, राइट? बिकॉज हमारे कस्टम्स ऐसे हैं, पीपल डू नॉट हैव इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, सोशल प्रोहिबिशंस होते हैं कि ये काम ये नहीं करेगा, वो काम वो नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई इंडिया में सोशल इक्वालिटी बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको समझता है कि इंडिया में देखो कैसे सोशल इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे आपको कास्ट और कम्युनिटीज दिए हुए हैं, और देखो ग्रेजुएट्स अमॉन्ग 1000। तो अगर यू कैन से शेड्यूल कास्ट के 1000 लोग हैं, तो देखो उनके ग्रेजुएट्स, ये थोड़ा डेटा पुराना है, ओके 20 साल पुराना है, बट स्टिल यू कैन सी द इन यू कैन से दिस। तो इसका लेटेस्ट डेटा ढूंढो आप, लेटेस्ट डेटा, ओके, और आपके इसमें अपडेट करो। बट ऐसा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 साल पहले क्या था, ओनली 47 पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट वेयर ग्रेजुएट्स, मुस्लिम्स में सिर्फ 61 थे, हिंदू ओबीसी में सिर्फ 86 है, शेड्यूल ट्राइब्स में देखो आप सिर्फ 109 है, क्रिश्चियंस में देखो आप यू कैन से 237 है, बढ़ते जा रहा है, सिक्स में देखो बढ़ते जा रहा है, अपर हिंदू कास्ट देखो सबसे ज्यादा, अदर रिलीजन्स मतलब पारसी वारसी कुछ होंगे तो इसमें सबसे ज्यादा, ऑल इंडिया एवरेज इज ओनली 150, is only 150. Are you understanding this? So you can say this is what we have to improve upon, very very important, right? So this is social inequality दिखता है हमारा इंडिया में इसका। नाउ इकोनॉमिक इक्वालिटी, व्हाट इज द इकोनॉमिक इक्वालिटी, राइट? So at the simplest level we would say that economic inequality exists because there is difference in wealth, property, ये सब में you can say difference है यहाँ पे, okay, and there is the class formation, so different classes का formation हुआ है। One way of measuring the degree of economic inequality in the society would be to measure the relative difference between the richest and the poor. So सबसे richest उसका कितना है और poor क्या है, तो आपको समझेगा कि भाई कितना inequality है, right? Another way is to estimate the people who are below poverty line. Okay, so now economic inequality को देखने के लिए, ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखने के लिए आपके पास दो, यू कैन से हाउ टू मेजर इट। वन इज इन द एब्सोल्यूट वे, ओके, इकोनॉमिक्स का भी एनसीईआरटीज आप देखो जब भी टाइम मिलेगा तभी, और दूसरा है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, आपने एक लाइन बना दिया कि भाई से फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट अर्निंग 100 रुपीज ओके पर डे, देन यू आर बीपीएल। तो इसके नीचे सारे कौन है, पुअर है, और इसके ऊपर सारे कौन है, दे आर एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। रिलेटिव मतलब क्या है कि you compare, right? If you don't have car, if you don't have vehicle, if you don't have a own house, if you don't have, you can say any other facility, right? So then you are poor, so we are comparing the life। तो ऐसे दो प्रकार के आप you can say प्रकार से आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर कर सकते हो, राइट? एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ or income, you can say, has probably never existed in the society, right? So एब्सोल्यूट जो है इक्वालिटी कभी भी पॉसिबल नहीं है, वे तो हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे ट्राई टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो डेमोक्रेसी कभी ये नहीं चाहेगा, अमेरिका का मैंने देखा है, आपको बताया आपको कि कोई रिच है तो गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगा। इंडियन वो सिस्टम था सोशलिज्म में कि भाई इतना रिच कैसे क्या हो गया तू, तेरे पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे हम,
और तेरा पैसा हम गरीबों में बांटेंगे। इसके लिए क्या हुआ, इंडिया में ब्लैक मनी इतना ज्यादा हो गया। यूएसए में आप देखते हो क्या इतना ज्यादा ब्लैक मनी है? नहीं है, क्योंकि रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ज्यादा टैक्स, बट इट इज नॉट क्रिमिनल टू बी रिच. It is not, you can say, criminal to be rich. Are you understanding this there? Okay, because this democracy is very clear. We are not going to create equality in economy. We are just going to create equality of opportunity, and you can say available to the people, in the belief that this would at least give those who have talent and determination chance to improve their condition. Right? With equal opportunities, inequality may still exist between individuals. Are you understanding this? Okay, but there is always a possibility of improving one's position in the society, right? But what happens is, many times when inequalities are entrenched, like slaves जो थे, blacks in America, entrenched है उनमें inequality, right? तो बहुत सारे generations लग जाएंगे. Are you understanding this? Over generations, it is very dangerous situation. देखो black का ही यहाँ पे example दिया हुआ कि वहाँ पे अगर आप देखोगे in America, what is the situation of blacks in America, right? If you can say a society, if in a society certain classes of people have enjoyed considerable wealth, the power, you can say, which goes with it, right? तो अगर आप wealthy हो तो आपका नेटवर्क कैसे होगा? सो आप, हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था ना, व्हाट आर द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू बिकम वेल्दी और सक्सेसफुल, हमने पढ़ा था, याद है आपको? डू यू रिमेम्बर? वी हैड स्टडीड 3 थिंग्स. व्हाट वाज इट? 3 things we had, you can say, studied there. What was it? Do you remember that? What are the keywords, Simran? देखो यही तो बात है ना कि याद कर पा रहे हो क्या कीवर्ड्स? कीवर्ड्स अगर याद कर पाए तो अमेजिंगली आप फटाफट लिख के बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट एक एक वर्ड में आप बोल सकते हो. यस, सो शारिक, इट इज करेक्ट. कौन से थे दोस्त? सो दे वर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कैपिटल, right? They were talking about social capital, and they were talking about cultural capital. ये ट्राइंगल याद है आपको कि इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिकली यू आर वेरी गुड, देन यू मीट रिच पीपल, so automatically your social capital, your networks are very strong. When your networks are very strong, are you understanding this? Cultural capital, that is your education, your language is also good, so this becomes very easy for then for you to become successful. So देखो वो concept मैंने यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दिया, right? तो blacks का मेरे को और अच्छे से clarity आ गया कि blacks में they might not be very rich people, so वो rich लोगों को मिलते नहीं है, उनको opportunity ज्यादा उधर दिखते नहीं है, right? Therefore the network is not that strong. Okay, and automatically education and all this wise, also skills wise, they might not be the best, so that is why they get into a vicious cycle. So they are in entrenched inequality. They are in entrenched inequality, right? Whereas those who are in power, they have all these 3 things. So that is why you can say उनको rich बनना easy हो जाता है. Because of the power of the wealthy class, it might prove difficult to reform such a society, make it more open and egalitarian. तो जो rich वाले हैं वो opportunities फिर देंगे भी नहीं blacks को. Why? Because you can say they want to keep it within their own circle. Okay, so now let us take, you can say, 3 to 4 minutes break, and now after this we are going to see all ideologies. So feminism देखेंगे, right? And then socialism, right? Formality ये क्या है? Formal equality, differential treatment, reservation का देखेंगे, affirmative action is that only. Okay, so let us see all this. Let us take a break and then complete this chapter. Are you enjoying this chapter? Is it interesting or it is becoming boring? Okay, so now feminism. So what is this feminism? It is a political doctrine of equal rights for women and men. तो feminism को अगर एक ही इसमें simple इसमें आपको define करना है, so what do you mean by feminism? So equal rights for
both men and women, right? Feminists are those, देखो, feminists can be men also. Understand that they are those men and women who believe that many inequalities, okay, are neither natural nor necessary. They can be altered, and both can live equal lives, right? And because you can say feminists say that कि ये सारे जो अपने inequalities create किए हैं, okay, it is because of the patriarchy. Patriarchy मतलब क्या है? सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सिस्टम आपका ऐसा है जो यू कैन से वैल्यूज मेन मोर देन द वुमन, एंड दैट इज व्हाई मेन हैव पावर ओवर द वुमन. पैट्रियार्की इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन. देखो इसके ऊपर इस बार ऐसे आया था पैट्रियार्की के ऊपर. इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यू कैन से दे आर डिफरेंट बाय नेचर, ओके, और कहीं ना कहीं ये जो जस्टिफाई करता है अनइक्वल पोजिशंस को. सो फेमिनिस्ट क्वेश्चंस दिस वे ऑफ थिंकिंग and makes distinction between sex, which is biological, and you can say gender, which is given by the society. For instance, the biological fact that only women can become pregnant and bear children. Are you understanding? So this is a biological fact. This is the biological fact. But then what is the gender? What does the gender then gives us the role? So gender gives us the role. तो क्या role दे दिया women को? That they are only, you can say they are the only one, they should be looking after the children. But now it is changing, right? Even you can say men are taking paternal leave. Have you seen anybody taking a paternal leave recently? Yes, anybody? Yeah, Kohli. So this kind of examples you have to put in the essay so that उसको current context आता है, current context, right? Feminists show us that much of this inequality between men and women is produced by society and not by nature. So patriarchy क्या करता है? So ऐसे you can say rules दे देता है कि men are, you can say, responsible for public domain, whereas females are for private and domestic affairs. So feminists question this because वो बोलते हैं कि women आज हर एक public domain में active है, right? Women are, you can say, all over the world are employed. However, despite this, you can say employ है, और women का आज इसके लिए problem क्या हो रहा है? They have to do the, you can say, पब्लिक वर्क, दैट इज वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी करना है प्लस डोमेस्टिक वर्क भी उनको ही करना है. तो इसको बोला जाता है, ये कंसेप्ट को बोला जाता है, दे आर नाउ टुडे फेसिंग द डबल बर्डन. इसको डबल शिफ्ट भी बोला जाता है, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम. आप पॉलिटी के एनसीईआरटीज कर रहे हो क्या? 6 to 10th एनसीईआरटीज आर यू डूइंग साइमल्टेनियसली, राइट? सो यू हैव टू डू 2 lectures a day at least. Yeah. Sir, like caste discrimination is only seen in India, but gender equality is universal. Why so? Why so? Because you can say men went to do hunting and they went on war. So यहाँ से ये public domain में आ गए, and women because they were bearing children, right? So they were in the private domain. So those who got the power because they were in the public domain, those who got the power because they were in the public domain, they wanted to continue their power. Plus we saw private property जब से आया, men wanted to control the private property, right? So these are the common reasons which are been given, right? So women because they are childbearing, so they were made to sit at home, right? And they could not then participate in the war. Okay, so जो भी public में थे, बाहर थे, वो ऐसा हो गया. Sir, can we say that feminists are both men and women who believe? क्या sir, feminists are both, okay, feminists are against both men and women who believe in patriarchy. Yeah, as patriarchy is gender neutral term. Yes, 100%, Sharik, 100% that is correct. So ऐसा ये चीज है. Most of the women all around the world are employed, right? But they still are solely responsible for the housework. So this is the double burden. This is the double shift. Okay, and women are given little or no say in the decisions taken in the public domain, right? Feminist, you can say that public private distinction and all forms of gender inequalities should be eliminated. So I hope everybody's understood, you can say, feminism.
Everybody understood feminism today? Basic concept of feminism? Yes or no? Everybody in the class? Hi Anna. Okay, good. Now let us go ahead. Marxism and liberalism. Okay, now we are going to see what is the difference between Marx and liberals. Very important, huh? So these are the two most important ideologies of our times. Marx 19th century क्या बोल रहा था कि रूट ऑफ सारे जो इनइक्वालिटीज है, वो जेंडर इनइक्वालिटीज हो, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो, वो सोशल इनइक्वालिटीज हो, मार्क्स के हिसाब से बेस क्या है? व्हाट इज द बेस? वी हैव डिस्कस दिस इन सोशियोलॉजी. व्हाट इज द बेस? यस, जल्दी बताओ. एवरीबडी इन द क्लास. यस, इकोनॉमी. करेक्ट. सो दैट इज द बेस, राइट? प्राइवेट ओनरशिप इज द बेस. दैट इज इकोनॉमिक. जो रिसोर्सेज है वो बेस है. प्राइवेट ओनरशिप जब तक रहेगा तब तक सारा ये एक्सप्लॉयटेशन रहेगा. सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के रूप अलग अलग रहेंगे. कोई सोशल एक्सप्लॉयटेशन बोलेगा, कोई जेंडर बोलेगा, कोई यू कैन से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बोलेगा, कोई पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बोलेगा और इनइक्वालिटी बोलेगा. ये रहने ही वाला है. ऑल दिस इनइक्वालिटीज आर गोइंग टू बी देयर because at the base there is private ownership. At the base there is private ownership, right? Such power enables them to influence. Then देखो, अभी आपको private ownership आपको continue करना है, right? You are in power because you have got the private ownership, so you want to continue this. So that is why state policies would be such, laws would be such. Are you understanding this, right? So Marxist and socialist feel that economic inequality provides the support to other forms of social inequality. Okay, so economic inequality leads to all the other kinds of social inequality. And there is an element of truth also there, right? There is an element of truth also there. Dekho, now in urban areas, if a person of SC, okay, becomes rich, what do you think? Does he, you can say, automatically, does he get power milta hai kya usko? Yes. Does he, you can say, get respect in the society? Yes. Does he get social equality in the society? Yes or no? Yes or no? Yeah. So there is also element of truth to that कि अगर इकोनॉमिक सिचुएशन आपने अच्छा कर दिया तो आपको ये सब यू कैन से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ओके. सो देयरफॉर टू टैकल इनइक्वालिटी, क्या बोल रहे हैं ये मार्क्सिस्ट कि वी नीड टू गो बियॉन्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी. वो बोल रहा है, मार्क्स क्या बोल रहा है, भैया ये पागल मत बनाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का खेल हमारे साथ मत करो. ओके, यू हैव टू गो बियॉन्ड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और वो क्या बोलते हैं मार्क्स, किसी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं हुआ. इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये थ्योरी किसका है? ये लिबरल्स का थ्योरी है. लिबरल्स, याद रखना. बट मार्क्स बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होगा. ये जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको खत्म करना पड़ेगा. ओनरशिप शुड बी पब्लिक. ओनरशिप शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक सो दैट public distributes in an egalitarian manner. Everybody understood this? Yes or no? So that ensure public control over resources and forms of property. समझा है नहीं समझा है? हाँ या ना? मार्क्स का सोल्यूशन समझा है कि आपको क्या है? Have you understood this? Everybody in the class? Yes? Yes or no? Okay. And opposing point of view क्या है? What is the opposing point of view? Liberal. प्रचिति, मार्क्स क्या बोल रहा है दोस्त? मार्क्स बोल रहा है कि ये जो सारे आप अनइक्वालिटीज बोल रहे हो, इनइक्वालिटी सॉरी, इसका रूट क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ दिस? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्यों है? प्राइवेट ओनरशिप, राइट? व्हाट डिड लिबरल्स टेल अस? व्हाट डिड लिबरल टेल अस? दैट you just create equality of opportunity. You just create equality of opportunity, and then if there are inequalities, we should not be worried about it, because then it all depends upon the talent of the people, skill of the people, natural abilities. Yes or no? Prachiti, did you understand this? But Marx said no, only creating equal opportunities would not work, because your system is of private ownership, which is a exploitative system. क्योंकि वो लॉज ऐसे बनाएगा जो यू कैन से रिच है, जो पावरफुल है, उनके फेवर में ही लॉ बनाएगा, तो सिस्टम ही उनके फेवर में होगा. तो आप क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके करोगे? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्राइवेट ओनरशिप जो है ये खत्म करके पब्लिक ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप होना चाहिए, ताकि वो जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इगैलिटेरियन वे में कर पाए. समझा नहीं समझा अभी?
Prachiti, have you understood it? Everybody in the class, right? So liberal theory तो हमने देखा है. Liberal theory का सबसे important for liberals most important thing or most important concept or most important, you can say, sacred thing for them is competition. They think that till you ensure, and this is the American way, till you ensure fair competition, बस उतना ही करो. सोसाइटी में आपका काम क्या है? फेयर कंपटीशन इंश्योर करो, बस बाकी सब छोड़ दो. इंडिया क्यों पीछे है? इंडिया ने कैपिटलिज्म तो अपना दिया है, बट हाउ इज द कैपिटलिज्म? व्हाट इज द इंडियन कैपिटलिज्म कॉल्ड एज? क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां पे थोड़े लोगों को ही फेवर किया जाता है. अमेरिका में वैसा नहीं है, फेयरनेस होना चाहिए. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज कंपटीशन, मोस्ट एफिशिएंट फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज इन द सोसाइटी. वो क्या बोलते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, लोगों में कंपटीशन क्रिएट करो, और जिसमें नेचुरली यू कैन से, जिसमें टैलेंट होगा, सो देट वुड बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सबको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दो, मतलब सबको एक बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सब दे दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दो, राइट? यस और नो? सो यू जस्ट क्रिएट दैट. स्टेट शुड इंटरवीन. अभी देखो ये एडवांस आया ना लिबरलिज्म की, चलो ठीक है, वेलफेयर कैपिटलिज्म है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटीज दे दो. ओके, सो देन लेट कंपटीशन टेक केयर. कंपटीशन से क्या होगा? फ्री एंड फेयर कंडीशंस क्रिएट करो. इट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिवॉर्ड्स फॉर देम. एज लॉन्ग एज कंपटीशन इज ओपन, इट इज फ्री, inequalities are unlikely to become entrenched. मतलब rich would only become rich, ऐसा नहीं रहेगा. Okay, and people would get due reward of their talents and efforts. For liberals, the principle of competition is the most just for selecting the candidates for the jobs or admission to the educational institutions. Are you understanding? क्योंकि वो लोग किसको दे रहे हैं? Merit. Merit is the most important thing, right? From time to time, government and courts have stepped in to regulate educational institutions, right? So that क्या हो जाता है? Merit should be, you can say, always given the due. Some people may still not get admission, but it is considered to be a fair way of distributing the limited seats, right? So merit. Unlike socialists, liberals do not believe that political, economic and social inequalities are necessarily linked. सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट क्या बोले? ये सारे लिंक्ड है इनइक्वालिटीज. कैसे सारे लिंक्ड है इनइक्वालिटीज? ये सब आते हैं इकोनॉमी से. इकोनॉमी की वजह से सोशल इनइक्वालिटी आता है, इकोनॉमी की वजह से यू कैन से आपका बाकी के पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आता है. ये ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते हैं कि हर एक इनइक्वालिटी को आपको सेपरेटली टैकल करना पड़ेगा. इसके लिए ये लोग बोल रहे हैं डेमोक्रेसी सेटअप अगर आपने किया, इफ यू सेटअप डेमोक्रेसी, तो आपने पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को हैंडल कर दिया. Are you understanding this? But it might be, you can say, necessary to devise different strategies to deal with social, you can say, differences and economic inequality. The problem for liberals is not inequality as such. तो उनको inequality से कोई दिक्कत नहीं है. उनको सिर्फ क्या चाहिए कि unjust नहीं होना चाहिए सिस्टम, entrenched नहीं होना चाहिए सिस्टम, सबको अपने मेरिट के ऊपर से रिटर्न मिलना चाहिए. समझा है? Everybody understood this liberalism? Everybody in the class? Yes or no? Everybody? Okay, great. Now you can say, let us go towards socialism. Socialism refers to set of political ideas that emerged as a response of inequalities present. तो ये capitalism की वजह से inequalities थे. इसके लिए Marx came, socialism came. I have explained you all these things, right? And socialism सोच रहा था कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें इनइक्वालिटीज, उसको कैसे हम कम करें, राइट? एंड कैसे हम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन से, इक्वली करें, राइट? सो you can say, what did they say? They said that the government would have to step in and government would have to give education, healthcare. हमारे यहाँ पे जो एक सोशलिस्ट लीडर बहुत जो पॉपुलर है, दैट इज राम मनोहर लोहिया. मैंने आपको बताया भी था, जो यूपी बिहार इज वेरी पॉपुलर इन यूपी, समाजवादी पार्टी,
इन बिहार हमारा जो लालू का पार्टी है, इवन नीतीश पार्टी, लालू का कौन सा पार्टी है मैं तो भूल ही गया उसका नाम, आरजेडी। यस। सो ये सब पार्टीज राम मनोहर लोहिया को फॉलो करते हैं। सो ही वाज अ सोशलिस्ट थिंकर, राइट। सोशलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी और मराठी? यस, एनीबडी इन द क्लास? समाजवाद, यस, राइट, करेक्ट। और कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं? वामपंथी। यस, नहीं, वामपंथी इज लेफ्टिस्ट। वामपंथी इज लेफ्टिस्ट। साम्यवाद, यस, करेक्ट रोहन, एग्जैक्टली। साम्यवाद आर कम्युनिस्ट्स एंड socialist are samajwadi, right? So in India, socialist thinker Ram Manohar Lohia, that is samajwadi jo the Ram Manohar Lohia, he said that there are 5 type of inequalities in the society. देखो इनका फंडा सोशलिज्म से अलग है। सोशलिज्म क्या बोलता है यूजुअली कि इनइक्वालिटीज जो है वो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से आता है, बट इन्होंने सोशलिज्म को मॉडिफाई किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो उन्होंने क्या बोल रहा है, 5 टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज है। कौन सा है फर्स्ट इनइक्वालिटी? जेंडर वाला, राइट, मेन एंड वुमेन। सेकंड वो क्या बोलते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन यू कैन से कास्ट स्किन। ओके, सो ये बोल रहे कास्ट स्किन वॉट एवर दैट इज, राइट। थर्ड वो क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है भैया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर, राइट। So you have got inequality which is based on man and woman, one, then which is based on 2, 3, 4. Okay, basically this is their economic inequality. So he is giving different बोला है उसने। ये तो कास्ट का एक हो गया, फिर फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा आफ्टर कास्ट? स्किन हो जाएगा। एंड यू कैन से कॉलोनियल रूल का भी उन्होंने एक इनइक्वालिटी बोला शायद से। सो कॉलोनियल रूल की वजह से भी इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी अगर हमने उसको कंसिडर किया तो उसको ऐसे पकड़ सकते हैं, राइट। सो दिस माइट अपीयर सेल्फ एविडेंट आइडिया टुडे कि भाई ये इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, बट ड्यूरिंग यू कैन से लोहिया's टाइम it was common for socialists to argue that class inequality was the only form of inequality, right? वही बोल रहे हैं ना सोशलिस्ट की पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आता है, उसकी वजह से बाकी सब आता है। अदर inequalities did not matter, okay, and it would end automatically if economic inequalities ended. Lohia argued that each of these inequalities had independent roots. ये सारे के इंडिपेंडेंट रूट्स है, ओके, एंड दे हैड टू बी फॉट सेपरेटली। तो ये सोशलिज्म के थोड़े अगेंस्ट जाता है, बट खुद सोशलिस्ट है। ही डिड नॉट स्पीक। इसके लिए जो पॉलिटिकल साइंस वाले होते हैं ना, ओके, जो पॉलिटिकल साइंस वाले, उनको ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सोशलिज्म इज दैट हैट which has been worn by everyone, so much so that it has lost its original shape. ऐसा कुछ है ना? यस शारिक, हाँ या ना? यस, so it has lost its original shape. तो इतने अलग अलग वर्जन है सोशलिज्म के, राइट। लाइक you can say Nehru was also socialist, but his socialism is called, Nehru's socialism is called as Fabian socialism, जो डेमोक्रेसी में मानते हैं और रिवोल्यूशन में नहीं मानते हैं, वो इवोल्यूशन में मानते हैं कि थ्रू डेमोक्रेसी वी वुड, या भगत सिंह वाज आल्सो सोशलिस्ट, राइट। सो सब अलग अलग सोशलिज्म, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। तो ये एक नया वर्जन निकाला है, किसने निकाला है? राम मनोहर लोहिया, और उनके जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, दैट इज समाजवादी पार्टी। देखो नाम में ही समाजवादी पार्टी, और राष्ट्रीय यू कैन से जनता दल। Okay, he did not speak of revolution in a singular, you can say, way. For him, struggle against this 5 inequalities constituted 5 revolutions. तो अलग अलग 5 revolutions लगेंगे। He added 2 more revolutions to the list: revolution for civil liberties, okay, against the unjust encroachment of on private life, and revolution for non-violence, right? तो गांधी जी को भी उन्होंने अपना दिया, okay, for renunciation of weapons in favor of सत्याग्रह। These were the 7 revolutions, Sapta Kranti, which Lohia was, you can say, for Lohia was the ideal of socialism. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, राम मनोहर लोहिया सप्त क्रांति, तो भैया सप्त क्रांति पे प्रिपेयर कर लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Now, how to promote equality? We have already noted that some of the basic differences among the socialists and the liberals, हमने देख लिया,
बट दोनों का गोल क्या है भैया? इक्वालिटी तो होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, सो व्हाइल द रिलेटिव मेरिट्स एंड लिमिटेशन हर एक को होगा, राइट? हर एक वर्ल्ड में हम डिबेट कर रहे हैं. वी नीड टू स्टिल कंसिडर कि कैसे हम प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज डिफाइन करें सो दैट वी कैन गो टुवर्ड्स इक्वालिटी. और उसमें से वन प्रिंसिपल और पॉलिसी है विच वी कॉल एज अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं. सो वी आर नॉट जस्ट स्टॉपिंग बाय क्रिएटिंग equality of opportunity. We are not just stopping there. We are going beyond that. We are going beyond that and giving affirmative action. So now let us see कैसे हम establish करें ये equality को. तो पहला formal equality कर दिया. Formal equality मतलब वही है, okay, that we end inequality formally. That is constitution में हमने हमारे जो legal systems है हमने बोल दिया सबको equal opportunities होंगे. Are you understanding? सबको हमने right to vote दे दिया. This is all formal equality on paper. On paper. Caste system हमने बोल दिया कि भैया आर्टिकल 17 आ जाएगा, राइट? सो यू कैन से हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, प्रिविलेजेस को हमने एंड कर दिया. जैसे आर्टिकल 18 है कि नो टाइटल्स, हमने प्रिविलेजेस को एंड कर दिया, राइट? Yes or no? Since many of these systems have sanction of law, equality requires that the government and the law of the land should stop protecting the inequality. That is formal. This on paper आपने equality का principle establish कर दिया legally और constituent through constitution. जैसे constitution भी है हमारा article 14, 15, 16 क्या बोलता है कि बाबा कोई भी हम discrimination नहीं करेंगे on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Right? Our constitution also abolishes the practice of untouchability. So this is all called as formal equality. समझा व्हाट इज फॉर्मल इक्वालिटी कंसेप्ट? नाउ इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिजर्वेशन. उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट और उसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन. अफर्मेटिव एक्शन, राइट? इसको कभी कभी बोला जाता है रिवर्स, यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन और रिवर्स इनइक्वालिटी. ऐसे भी अलग अलग इसको शब्द दिए जाते हैं. सो हमको क्या समझा है कि formal equality or when we say all are equal before the law is not sometimes sufficient because of the to establish the equality. Why it is not sufficient? Why it is not sufficient? Sometimes we need to treat some people differently so that they can enjoy equal rights. We have to create, इसको क्या बोलेंगे दूसरे वर्ड में, level playing field create करना पड़ेगा. We have to create the level playing field so that everyone can enjoy equal rights. सबको equal लाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा. Certain differences between the people may have to be taken into account, right? तो हमारा क्या बोलना है कि जो inequality थी वो इतनी ज्यादा trenched inequality थी भैया हमारे सोसाइटी में कि भाई आज हमको कुछ ना कुछ एक differential treatment देना पड़ेगा so that everybody becomes equal. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया ना आपका कि ये देखो अलग अलग ग्रेजुएशन में ही आपको एग्जाम इतना एंट्रेंस्ड है कि भाई हमको कुछ ना कुछ यू कैन से इनको हमको फ्री में एजुकेशन देना पड़ेगा, इनको हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा ताकि ये जो आंकड़ा है वो सबका सिमिलर आ जाए. ये जो आंकड़ा है वो सबका सिमिलर आ जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो एवरीबडी इन द क्लास? देखो, टू एंश्योर फेयर सिलेक्शन यू विल गेट द सेम टेस्ट, यू मस्ट ऑल क्लाइंब द ट्री. तो फॉर्मल इक्वालिटी क्या है? दिस इज अ फॉर्मल इक्वालिटी दैट ऑल शुड क्लाइंब द ट्री. बट इज इट गोइंग टू क्रिएट इक्वालिटी? इज इट गोइंग टू क्रिएट इक्वालिटी? यस. कैन दिस गाय यू कैन से क्लाइंब द ट्री? ये तो इसको ट्री को गिरा देगा ये पूरा और फिर उसके ऊपर चढ़ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? यस, एग्जैक्टली. So that is going to that you have to understand. हमारा एजुकेशन सिस्टम का ये डायग्राम बताया जाता है ना. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, राइट, कि जो रोट लर्निंग में अच्छा है, जो रोट लर्निंग में अच्छा है, राइट, उसको बोला जाता है तू इंटेलिजेंट है भैया. बट दैट इज व्हाट हैपेंस. यू वुड हैव सीन, okay, or you will see in the future that those who are, I am not saying those who are always good in academics, do they always become successful in life? Do they always become the most successful in life? The answer is not always.
not always. In fact, not necessarily. Exactly. So many a times जो you can say academics में अच्छा नहीं है, तो उसका socialization अच्छा हुआ है क्योंकि उसने बहुत सारे situations face किए हैं, troublesome situation, right? तो वो you can say उसका emotional intelligence और अच्छे से develop हो जाता है, right? So, women working in call centers would require special protection. You do you agree or not? Yes, do you agree or not? They would require special protection so that if they can be protected going home. So this should not be seen as infringement and equality. फिर men बोलेंगे भाई हमको क्यों नहीं है ये? हमको भी woman जैसा facility दो, right? What are the differences? What kind of differences hinder the access to equal opportunities? What kinds of policies may be pursued to overcome this? हम कैसे? So these are the policies which are called as affirmative action, which enhance the equality of the opportunity. In our country, we relied on the policy of reservations for the affirmative action. तो अभी हम देखेंगे क्या है भैया affirmative action, right? Let us see what is affirmative action. So हमारे यहाँ पे कास्ट रेस ये सब थे. फॉर दिस यू कैन से द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू अवे विद द सोशल डिस्टिंक्शंस, राइट? सो सॉरी, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द अफर्मेटिव एक्शन. मैंने वही बोला कि ये कैसे हमारा आ गया. अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड on the idea that it is not just sufficient to establish formal equality. देखो ये कीवर्ड हो गया, formal equality by law. If we wish to eliminate inequalities which are entrenched, that is deeply rooted, some positive measures have to be done. These are the affirmative action which are designed to have cumulative effect to undo the past inequalities. Like क्या क्या हो सकते हैं affirmative action? Example क्या है? Preferential spending on the facilities of disadvantaged communities. जैसे हम education उनको free में देते हैं, OBCs और ये सब लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज देते हैं ज्यादा, राइट? उनको एडमिशन के लिए कोटा देते हैं, राइट? सो वी हैव गॉट द पॉलिसी ऑफ कोटा रिजर्व सीट्स, राइट? देन वी हैव गॉट इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? सो दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट रिमेन ऑन पेपर और एक्चुअली वो अचीव कर सकते हैं. ओके. So, and this has been the subject of considerable debate and disagreement कि भाई reservation देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. The policy has been defended on the ground that certain groups have been victim of social prejudice, discrimination, exclusion, segregation. कि भाई आज आपने जब अगर formal equality भी establish कर दिया, then also they would be denied equal opportunities. Cannot be immediately expected to compete with others on equal terms. Therefore, in interest of creating an egalitarian and just society, they need to be given special protection. Right? क्या है इनका special protection? Special assistance in form of affirmative action देना पड़ेगा. But you have to realize that ये special assistance जो है ये permanent नहीं होना चाहिए. It should be temporary. It should be time bound. हम क्या assume कर रहे हैं कि एक time तक हमने इनको दिया तो ये सारे जो उनके डिसएडवांटेजेस है वो ओवरकम करेंगे, इक्वल टर्म्स में आ जाएंगे, राइट? एंड देन द अफर्मेटिव एक्शन वुड बी, यू कैन से सेड दैट इट हैज डन इट्स purpose. The purpose has been served and the society is, you can say, becomes more equal. Whether treating people differently can ever lead to equality, ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं. ओके. अभी जो क्रिटिक्स है वो क्या बोलते हैं कि आपने इक्वालिटी, you can say, अगर आपको ये करना है तो you should not go for reservations because some people are deprived of admissions because of the reservations, right? It creates unfair system. It is arbitrary. Are you understanding this? So it is not equal treatment. Competition merit को आपको, you can say, problem आ जाता है, and this is reverse discrimination which you are doing. This is reverse discrimination. And one of the most important arguments is that you can say कि अगर आपने रिजर्वेशन लाया तो इससे उल्टा क्या हो जाता है कि जो कास्ट आइडेंटिटीज है, yes or no, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. डोंट यू फील? yes, this is one system that everybody becomes aware of their caste, right? Say for example, till 10th standard
Okay, when you were in school, most of you would not even know the caste of your friends. True or false? Most of you would not even know the caste of your friends, especially if you are in the urban setup. Especially if you are in the urban setup, right? But when 11th standard they get admission, you go for admission and it is on base of caste, then you realize the caste of different people. Then you realize the caste of different people. So this is the, you can say this, it is your caste identity are becoming more entrenched. They are becoming more entrenched, right? Okay. सो कंपटीशन, लिमिटेड सीट्स है भाई, कंपटीशन आपका चला जा रहा है. बट देन फर्स्ट जनरेशन वाले अगर लर्नर्स है, तो पहली बार कोई पढ़ाई कर रहा है आपके घर में, तो बट ऑब्वियसली उसको कम ही मार्क्स आएंगे, उसको इतना ज्यादा सोशलाइजेशन है नहीं पढ़ाई का. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो स्टेट मस्ट डिवाइस सोशल पॉलिसीज which help people make equal, give them a fair chance to compete. The fact is that the spheres of education, healthcare, okay, in the spheres we have done very less, and most of the population is, you can say, deprived. Therefore you are got inequalities in school education, right? Yes or no? Right? So if they get a chance, their schools have little to offer, and elite schools में बहुत अच्छे से वहाँ पे उनका पढ़ाई होता है, right? So this hampers their chance to improve their qualification, face hurdles, right? Therefore they are given special, you can say, उनको कोचिंग नहीं मिलेगा उनको, right? उनके पास पैसे नहीं है, तो आजकल तो आपको पता है हर एक एंट्रेंस अगर आपको क्लियर करना है तो आपको क्या लगने वाला है? कोचिंग. नाउ यू आर ऑल स्टडिंग फॉर यूपीएससी. honestly tell me that you are doing these classes, yes, and those who are not doing these classes, be honest with yourself, who is at a privileged position? Those who are doing classes or not doing classes, who are at the privileged position? Don't you feel that you have got a jump start? You have got a jump start, yes, in your preparation. So that is, you can say, that is why you have got reservation. That is why you have got reservation, right? Some, everybody would not be able to afford classes or go and join the classes. So social and economic inequalities of this kind hinder the pursuit of equal opportunities. Most theorists today recognize this. What they contest is not the goal of equal opportunity, but the policies that the state should pursue to achieve this goal. Okay, ये वाला जो है, again you can say very very important है. ये वाला जो paragraph है, just read, you can say 3 to 5 times. जस्ट रीड दिस 3 to 5 times. आप घर पे एक बार पढ़ लो, ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि what are we, you can say, trying to understand here. Should the state reserve seats for the deprived communities, or should they have special facilities to develop their talent skills from the early age? How should we define the deprived? ये सब questions है आज हमारे सामने. Should we use economic criteria to define the deprived, जैसे हमने economically weaker section लाया हुआ है? I think that it is a flawed policy, personally, on the personal level, but you should not say that in the interview. It is my personal opinion, right? You have to make your own opinion. Or should we use, you can say, social inequalities arising from the caste in our country as the basis of identifying the different groups? So हमने क्या किया? हमने वही किया ना, other backward classes. You remember this, right? OBCs का debate, तो हमने उसको other backward caste ही पकड़ा है हमने, right? Yes or no? You remember sociology, right? आज अभी आपको important समझ रहा है sociology करने का. Okay. So all these are debated. Ultimately, the policies that we choose should be justified in terms of their success in making the society more egalitarian, fair to all. While reflecting on the issues of equality, distinction has to be made between treating everyone in an identical manner. Identical manner मतलब equal opportunity आपने दे दी सबको, and treating everyone as equal. Okay, so equal कब करोगे आप? When you are creating conditions wherein people can make use of the, you can say, equal opportunity. So identical manner is formal equality, and this is, you can say, positive discrimination से. The latter may on occasions need, यही बोला ना मैंने आपको, differential treatment. So इसको दो अलग keywords मिले. When you treat everybody identical manner, it is formal equality. When you treat everybody as equal, then it might have
positive discrimination, right? So differential or special treatment may help to realize the goal of equality, but it requires justification, one. और दूसरा रिफ्लेक्शन कि बाबा उसको ये करो कि पॉलिसी सच्ची में यूज हो रही है नहीं हो रही है पॉलिसी, राइट? Since the differential treatment for different communities was the part and parcel of the caste system, and the practices like apartheid liberals are usually wary of deviation, right, from the norm of identical treatment. तो ये देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. क्यों हमने, यू कैन से, इसको रिफ्लेक्ट करना है, क्यों हमने हमेशा जस्टिफाई करना है, क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नेगेटिव भी जा सकता है. कैसे नेगेटिव जा सकता है? ये लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आप आज दे रहे हो, आप पॉजिटिव डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट वही पॉजिटिव लोग क्या बना के रख देंगे उनका राइट समझ के, यू कैन से वो कल नेगेटिव हो सकता है, वो कभी एंटी ना होगा. जैसे कास्ट सिस्टम, उल्टा कास्ट सिस्टम हो जाएगा वो, ये और नो, या फिर उल्टा अपर्टाइड सिस्टम हो जाएगा. क्योंकि ये भी बेस, इनका भी बेस किसके ऊपर था? इनका भी बेस किसके ऊपर था दोस्तों? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. समझ रहे आपको? हाँ है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो आज जो आपने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है उसका हमेशा जस्टिफिकेशन ढूंढो, उसका हमेशा रिफ्लेक्शन देखो कि भाई अभी भी नीडेड है क्या, उसमें क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है. नहीं तो वो क्या बन जाएगा? न्यू कास्ट सिस्टम बन जाएगा, न्यू अपर्टाइड सिस्टम बन जाएगा. दिस इज डेप्थ, दिस इज ब्यूटीफुल कंक्लूजन. हैव यू अंडरस्टूड हाउ दे हैव कंक्लूडेड द एसे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझे आपको? क्या ब्यूटीफुल कंक्लूजन है. अप्रिशिएट दैट, राइट? सो नाउ लेट अस थिंक. मैटरनिटी लीव देना, राइट? देखो, मैटरनिटी लीव देना, इज इट जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड टू गिव मैटरनिटी लीव? यस और नो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिखो आप, यस और नो लिखना है आपको. वर्किंग वुमन, इफ शी इज वर्किंग, men are not going to get the maternity leave, women are going to get. Is it justified? Yes or no लिखना है आप. Then should a school spend money to buy special equipment because the school has got two visually challenged students? Should it buy special equipments, or it can use that money to buy more books in the library so that everybody is benefited? Or should it buy it special equipments for the visually challenged? Yes or no? Okay, now Geeta plays brilliant basketball, so the school, should it build basketball court for her so that she can develop her skills further? What should the school do? Basketball court करेंगे? Yes or no? Yes, Rahul is saying yes. Okay, Bharati is saying no. Difficult. Rupal is saying no. Okay, चलो, इसका मुझे कोई तो अनम्यूट करके आंसर दो. हाँ, इसका लास्ट वाले को कोई तो अनम्यूट करके आंसर दो. दिस वुड डेवलप योर, यू कैन से, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी. दिस वुड डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स. ओके, देखो कौन कौन लीडर आज मुझे समझेगा. जीत्स पेरेंट वांट हिम टू वेयर अ टर्बन. ओके, वेरी गुड साई, दैट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन कि उसको कोचिंग किधर तो अच्छी जगह पे दे दो ना, उससे अच्छा जहाँ पे बेटर कोचिंग मिलेगा उसको. सो जीत्स पेरेंट वांट हिम टू वेयर टर्बन इन स्कूल, and Irfan's parent want him to do a prayer on Friday, right? Friday का जो उनका नमाज होगा वो उसको पढ़ना है. So the school should not insist Jeet to wear a helmet while playing cricket. What do you feel about this? Should the school not insist कि वह हेलमेट मत पहनो, आप, आपका टर्बन है तो चलेगा? And Irfan's teacher should not ask him to stay back for extra classes on Friday. बताओ कैसे हैंडल करोगे? यू आर द स्कूल प्रिंसिपल, एथिक्स केस स्टडी, कैसे हैंडल करोगे? हु इज गोइंग टू अनम्यूट? हु इज गोइंग टू अनम्यूट? हु इज गोइंग टू बी द लीडर? यस, संतोष, रूपाली, प्रचिति. Sir, am I audible? यस, संतोष बोलो. वेरी गुड. Sir, in this, we can say that both the things that have been talked about, they are for the personal benefit of the students themselves, like wearing a helmet instead of a turban. It is for the protection while playing cricket. So it is for his personal benefit that the school is insisting him to wear the helmet, and for the extra classes, it is for his own benefit that he should that he will improve his own educational this thing, which will help him further in life. So he can do the required practice of namaz after some time, or maybe like that. बट व्हाट वुड यू से कि उसको अलाउ करोगे नहीं करोगे, कि विदाउट हेलमेट उसको अलाउ करोगे नहीं करोगे? दैट इज द क्वेश्चन.
Yes, Santosh, would you allow him that without helmet can he play cricket? Then, sir, we can leave the decision upon him after stating both the sides. Like, if you don't wear the helmet, you're going to get hurt. There are chances or more probability of you getting That hurt. And everybody knows. That everybody knows. I am just asking for the decision now. That are you going to allow or not allow? If you are not yeah, allowing, you are hurting the religious sentiments. yes, sir. But then I will not allow because that will not help him if I What allow. is the justification you will give by not allowing? Uh, so the justification I will give is that if that he should wear the helmet for his own benefit. That's the only thing I will say. That it is his own good or his own benefit of not wearing for wearing the helmet in the cricket ground, or else there are chances of him getting hurt. ठीक है चलो हशीर रचना मनीषा anybody wants to try Parth yes Sai go ahead Sir, may I? yes yes Sir, I will not allow him to means wear the turban while playing cricket, or as it was said earlier, Friday prayer, because this is not madrasa; it is a government school, and we cannot discriminate with such things. I think. so no positive discrimination for them just because you can say some people have got different you can say religion you would not respect their religion No, means they should do it in their personal space or private. in personal space so no wearing turban while playing Yes, cricket yes. no wearing turban okay okay yeah chalo Simran Sir, I believe that whenever we have such a problem, we should think about a solution instead of taking it as a two answer or a closed question type of thing. Maybe if possible, we can try to make up. I mean, try to innovate, or maybe try to at least inculcate the ideas into the children, that maybe we can try to innovate some kind of helmets that may be able to be worn along with the turban. And about the Islam thing, it is said that they can read or pray the namaz anywhere. So maybe we can give the child only that much of time as a break to go and read the namaz, because it is indirectly actually directly instilling the cultural values as well. So instead of trying to like negate everything directly, we can try to find solutions. okay we try to find solutions okay anybody else nobody no leaders yes Sharik go ahead सर पहले तो टर्बन वाला अलाउ करना चाहिए, क्योंकि मतलब उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो उनका टर्बन है मतलब दो टाइप के होते हैं, मतलब एक थोड़ा सा मतलब जो हैवी वेटेड होता है और जैसा एक हरभजन सिंह जो पहनता है तो वैसा वैसा टाइप में अलाउ कर सकते हैं, उसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी रह जाएंगे और उसमें हेलमेट भी पहन सकते हैं. Correct. That is a good solution. कि भाई you can say cricketers रहे हैं ना. There have been so many cricketers who are wearing turban and they are playing cricket. That has not affected their you can say playing. Harbhajan Singh is there, Navjot Singh Sidhu is there. So you just tell them the same thing that you wear that kind of turban and you wear a helmet. हाँ. So no, Navjot Singh Sidhu also wore you can say the helmet and the turban together. So you can say that is the solution for the turban thing. So you wear your turban, but if you are just wearing the turban and saying that because I have turban I am not going to wear helmet, then you are not allowed. Yes. Yes or no? हाँ. और अभी इसका क्या करोगे फ्राइडे प्रेयर का? सर एक्चुअली इसमें मतलब अभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है. तो सर मतलब अगर पेरेंट्स अगर मतलब एक ही स्कूल तो है नहीं ना सिटी में, तो अगर वो स्कूल अलाउ कर रहा है कि मतलब जा सकते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर अलाउ नहीं कर रहा तो फिर स्कूल ने भी एक अलग से मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए 5 या 10 मिनट, जिसमें वो बच्चा खुद जाके अलग से पढ़ ले. और मतलब इससे दूसरे बच्चे जो है वो मतलब अगर बचपन से देखेंगे कि दूसरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स का कैसे टॉलरेंस रखना चाहिए, तो सोशलाइजेशन सारे बच्चों का भी उसमें जो है बेटर होगा. ओके सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि फ्राइडे को स्कूल जो है स्कूल बोल रहा है कि भाई एक्स्ट्रा क्लास हमने रखा हुआ है वो तो ऐसे चलेगा ही. और नो तो एक्स्ट्रा क्लास जो है वैसे तो चलेगा ही. और अगर आपके बच्चे को अगर यू कैन से ये प्रे वाला करना है इफ यू कैन से ही वांट्स टू प्रे in the Friday afternoon, then he can go, you can say in some different place there, just besides the class or somewhere in the school, and he can have his prayers and then again come back and attend the class.
हाँ ऐसा है. So everybody agrees to this solution. Everybody agrees to this solution. Okay, Simran also agrees, Santosh also agrees, Rahul agrees, Prachiti is also agreeing to this solution. So what you have done is you have created a positive discrimination here. Yes or no? You have created a positive discrimination here. Yes or no? Okay. तो वही चीज है कि बाबा आप कैसे situations को handle करते हो. That is what is going to make you a bureaucrat. So many of these issues relating the pursuit of equality have been raised by women's movement. In the 19th century, women struggled for equal rights. They demanded, for instance, the right to vote, the right to receive degrees, right? And you can say the rights which already the men had in the society. However, as they entered the job market, they realized that women required special facilities, right? Like maternity leave, like crèches, that is parna ghar, right? Without special considerations, it is very difficult for them to seriously compete with the jobs, right? They needed, in other ways, sometimes to be treated differently if they want to enjoy the same rights as men. As we deliberate on the issues of equality and examine whether different treatment is warranted in a particular case, we need to continuously ask ourselves whether the differential treatment is essential to ensure that the set of people can enjoy the same rights. This is the most important thing. कब differential treatment आप दोगे? Case study में याद रखना. When that differential treatment is helping them enjoy equal rights and they are not becoming privileged. Caution must be exercised that this does not yield new structures of dominance and oppression, and it becomes the means for some dominant groups to have special privileges and powers in the society. Differential treatment is intended and justified not only as the means of promoting a just and egalitarian society, right? So differential treatment is intended to just give the means to promote, you can say, just and egalitarian society. तो आपको क्या करना है? What you have to do, you can say do the fifth one. आपको fifth one करना है, second one करना है, first one करना है, right? Okay, then you have to, you can say, do the sixth one. Are you understanding? Do the sixth one. So this is the assignment for the day. Should we stop it here or should we go and continue to the next chapter? क्या करना है? रुकना है, continue करना है? आ रहा है मजा? और tomorrow? जल्दी बताओ. No one. Okay, ठीक है. We end it here. Rupali, bye bye. Take care. Stay home. Stay safe. See you tomorrow. Okay. I hope you are enjoying these sessions. Bye.